ओके, विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें अगर आप देख रहे हो डायग्राम की बात, तो जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, cell is divided cell cycle is divided into different phases. कौन सी phases हैं बोलो? G1, S and G2. G1 phase, S phase, G2 phase, और फिर उसके बाद आती है M phase, प्रो phase, मेटा phase, एना phase, टीलो phase. तो प्रो phase, मेटा phase, एना phase and टीलो phase. G1 और फर्स्ट के ग्रोथ फेज या G1 को गैप 1 फेज भी बोला जाता है, where cell prepare या cell grows in size and prepare itself for further division. S phase में DNA synthesis occurs और gap 2 में other proteins and organelles are formed. और जो ये phases हैं, this prophase, metaphase, anaphase और telophase, they are all known as mitotic phase, mitosis. So this is mitosis. This whole is known as, yes, anyone? Interphase. So this cell cycle is divided into two phases, interphase and mitosis. Interphase is divided into three parts, G1, S and G2. और फिर उसके बाद जो आता है M phase या mitosis. In between this M phase and G1 phase, there is another phase which is known as G0. G0 का दूसरा नाम क्या होता है? Quiescent phase. मुझे ये important question है, what is G0 phase? Quiescent, quiescent phase, which is also known as G0 phase. It is a phase where cells do not divide and they exit the M phase. Cells in this stage remain metabolically active but do not show any change. They are metabolically active. Why this is known as silent phase or Q0 या quiescent phase? Quiescent का मतलब होता है silent phase, as if there is no activity occurring. Alina, we are doing this chapter, cell cycle and cell division. The cell cycle and cell division includes two phases, interphase and M phase. In interphase, it is divided into three parts, G1, S and G2. G1 where cell grows in size, S phase where DNA synthesis occurs, and G2 phase where the other organelles or proteins are formed. And after Ma'am, we have to make this. No, it's already given in your NCERT. I am just discussing the chapter today. I'll make you write down in the next class, as I have already told you that I have to leave early. So I'm just giving you an idea. Just look on your screen only. समझ आ रहा है बच्चे यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Okay. तो इसमें G0 phase is known as quiescent phase. Quiescent का मतलब होता है silent phase. In this phase, it is a stage where cells do not divide further and they exit the M phase, or sometimes it is the phase in between G1 and M phase. It is a phase where cells enters G1 and exit M phase, and this phase, G0 phase, is entering into interphase, which is considered to be inactive stage, as these cell do not show any kind of a division, but it is metabolically active in this stage. ऐसे लगता है कि cell is inactive G0 में, but in this case the cell is metabolically active and is preparing itself to enter into the interphase. Clear everyone? तो cycle का मतलब जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनो. Cycle जिसमें point से start करो उसी point पे हम वापस आते हैं, that is considered to be a cycle. इसमें आप इधर से start करोगे G1 से, then you are coming back to the G1, तो this is a cycle.
Now coming to another phase which is mitosis. I hope सभी को clear था वो cell cycle पे 101 question probability है इस chapter में. तो इसमें जो question बनता है draw cell cycle and describe its events. Events में सबसे पहला event आता है interphase. Interphase is divided into 3 parts, which is G1, S and G2. Sorry, which is G1, S and G2 interphase में आएगा. और आपको इनके बारे में बता दिए. G1 में cell grows in size, S में DNA synthesis occurs. NEET का question, favorite question था कि what happens in S phase of cell cycle या cell cycle division. S phase में DNA synthesis occurs. G2 में second other proteins and organelles are formed. M phase में it is mitosis. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे, महक बेटे वी आर डूइंग दिस रिवीजन. सेल साइकिल अभी मैंने सिर्फ करवाया आपको. अब प्लीज ये रिकॉर्डिंग सुन लेना as I'm moving to the next part, which is mitosis. Mitosis is known as equational division because in this phase it is known as equational division. Why it is known as equational division? Because cell divides equally into two daughter cells and it is divided, it is known as equational matlab equal division, where cell chromosomes they duplicate and equally distributed into two daughter cells. It occurs in two steps. पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस which is division of nucleus. बहुत ध्यान से सुनते रहो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई डिक्टेट. एंड अनदर इज cytokinesis. Yes, cytokinesis is division of cytoplasm. दोबारा सुनो जिसको नहीं पता. कैरियो मींस डिवीजन, न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस डिवीजन. तो न्यूक्लियस डिवीजन को, न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या नाम देंगे? कैरियोकाइनेसिस. साइटो मींस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस डिवीजन. Division of cytoplasm is known as cytokinesis. So it occurs in two stages. पहले nucleus divide होगा, फिर cytoplasm. I'm dictating the steps. First step is pro. Pro मतलब होता है first, पहला. तो karyokinesis हम start कर रहे हैं. Karyokinesis में first step is prophase. Prophase is a stage where chromosomes becomes thickened and shortened due to coiling. And if I'll make the diagram, suppose this is a cell के अंदर न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइड होगा तो पहले हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे. क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, nuclear membrane. Nuclear membrane is always double membrane. In the first case, that is prophase, prophase is divided into two parts, early and late. जिसे नहीं किया वो बहुत ध्यान से सुनना. It's a division of nucleus. Ansh, we are doing this chapter, cell cycle and cell division. तो इसमें अभी तक जो हमने टॉपिक किया है वो सिर्फ सेल साइकिल की है. सेल साइकिल और सेल साइकिल का डिटेल्ड क्वेश्चन आता है. तो आई हैव ऑलरेडी मेड दिस सेल साइकिल. मीनाक्षी, वी आर डूइंग दिस चैप्टर बेटे, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इन अर्ली. मीनाक्षी, अंश बेटे, यू आर लेट टुडे. अच्छा, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट किया. महक, यू आर आल्सो लेट बेटे. तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ये स्टेप्स आते हैं. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड माइटोसिस. इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, G1, S and G2. G1 is first cap phase या फिर growth one. S means synthetic phase where DNA synthesis. I told you this is the favorite question from NEET. S phase में क्या होता है? DNA synthesis occurs. G2 में other proteins and organelles are formed. Then is M phase. M phase का दूसरा नाम है mitosis, which is prophase, metaphase, anaphase and telophase. In between mitosis and this interphase, इन दोनों के बीच में एक state आती है which is silent phase, which is quiescent. In this, cell remain inactive. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can I leave the class? What happened, Rite? Ma'am, I have to go with my family. Okay, no worries, Angelina. Yes, but just listen to the recording afterwards. Actually, Okay. I have to leave early also. Okay. Okay, beta. Next is mitosis. We are doing this mitosis. Mitosis is known as equational division. Why it is known as equational division? Because cell is equally divided into two daughter cells.
We have just now started with mitosis, Mehak Kondal. This is equational division where cell is divided, parent cell divides into two equal daughter cells. It is divided into two steps, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. केरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फिर साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. तो पहले केरियोकाइनेसिस होगी एंड आई वाज अबाउट टू डिस्कस दिस केरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज पहली स्टेज है. प्रोफेज में पहली, प्रो मींस फर्स्ट, प्रोफेज. इन दिस केस the nuclear membrane starts to disappear. Nuclear membrane, ये nuclear membrane थी. This starts to disappear. Chromosomes becomes shortened and thickened due to the loss of water molecule, that is condensation. Nucleolus, ये nucleolus है, starts to disappear. So this is what is early prophase. Whereas the centrosome starts to move towards the opposite poles. तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई प्रोफेज में, आपने बहुत अच्छे से लिखे हुए नोट्स. नो नीड टू नोट इट डाउन अगेन. बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं. प्लीज शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो. तो अर्ली प्रोफेज में क्या था, द क्रोमोसोम्स, ये जो ब्लैक ब्लैक बने हैं, दिस क्रोमोसोम्स बिकम थिकन एंड शॉर्टन ड्यू टू कंडेंसेशन. Nuclear membrane disappears, nucleolus disappears, and centrosome, which is present outside the nuclear membrane, they start to move towards the opposite poles. Late में क्या होगा, late prophase में, let's look at the late prophase. Late prophase में nuclear membrane disappear हो चुकी है. These centrosome, they have come to the opposite poles, and chromatids, they have arranged themselves in the spindle fibers. So this is prophase. Late and early. This is early prophase. This is late prophase. Next stage is metaphase. Metaphase is considered to be the best stage for viewing cell division. क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी chromosomes हैं, ये this X-shaped bodies हैं, they come to lie in the center. And this is an imaginary line which is equatorial plate. Imaginary line होती है equatorial plate, that is why it is called as metaphasic plate. तो centrosome के साथ ही attached होंगे via spindle fibers, and they come to lie in the middle plate, which is known as equatorial plate. The best stage to view cell division is metaphase because all the chromosomes will be aligned in the center, this one. So prophase, metaphase. So prophase, this is prophase, this is metaphase, then is anaphase. Let's see about anaphase. Anaphase में क्या होगा? The chromosomes जो X shape थे, they'll divide, ये ऐसे divide होंगे. anaphase में they'll divide, टूटने के बाद they'll try to move towards their opposite poles, and while their movement they'll change their direction ऐसे. They are moving towards the opposite poles. This is anaphase, and last is telophase. Telophase में क्या होगा? The cytoplasm also starts to divide. Cytoplasm मतलब आप लोगों को पता है, cell division, and there is chromosome, nucleolus. Nuclear membrane reappears. Nuclear membrane दोबारा आ जाएगी. Chromosome chromatin बना देगा. Nucleolus आ जाएगा, and they both will have a centromere, and then two daughter cells are formed, equal sized, with nucleus, chromosome, nucleolus and centrosome. दोनों के पास होगा. Nuclear membrane, chromosome and nucleolus plus centrosome. I'm repeating everything once again. Please listen to me carefully.
Mitosis बहुत important है क्योंकि generally this question comes in the paper, final exams, the various events that occur during the process of mitosis. So mitosis में it is known as equational division because two equal daughter cells are produced which have equal distribution of chromosome. Divided into mitosis, divided into two steps. ऊपर लिखा हुआ है karyokinesis, division of nucleus, cytokinesis, division of cytoplasm. Now we have started with karyokinesis. Karyokinesis में first phase आता है prophase. Prophase is a stage where there is shortening of chromosome markers. The nucleolus starts to disappear. Centrosome, they start to move towards the opposite pole. Late prophase में this nuclear membrane, nucleolus, they have disappeared. This centrosome, it is at the opposite poles with formation of spindle fiber. ये जो बीच में बने हैं ये लाइंस जो हैं दे आर स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव एस शेप. 3D स्ट्रक्चर होगा तो एस शेप्ड होती है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. Now coming to the next part, that is metaphase. Metaphase में all the chromosomes they come to lie at the equatorial line, and this is the best stage to view chromosome cell division because in this stage you'll view all the chromosomes and they are all aligned in equatorial plate. Center में आ जाएंगे तो this is the best stage. Next is anaphase. Anaphase में chromosome जो थे ऐसे they have divided and they start moving towards their opposite poles. Just look at their position. पहले इनकी position X shape थी. अब ये उल्टे V हो गए क्योंकि जब इनको तोड़ा गया they are moving towards their opposite poles and they have changed their alignment. They have changed their direction. तो मेटाफेज में और एनाफेज में डिफरेंट बनाना है. इसमें एक्स शेप है, इसमें ऑपोजिट वी शेप. टीलोफेज में nuclear membrane reappears, chromosome formation occurs, nucleolus occurs, centrosome, and cells cytoplasm starts to divide into two daughter cells. So two daughter cells are formed in case of the telophase. टीलोफेज के बाद ही साइटोकाइनेसिस होती है. साइटोकाइनेसिस immediately after karyokinesis, cytokinesis is followed. In case of animal cell, जो हमने अभी ये बनाया, this is a case of animal cell. The cytokinesis occurs by invagination. देख सकते हो अंदर की तरफ, by invagination of cell membrane, and this results in formation of two daughter cells. Whereas in case of plant cell, cell wall formation occurs. In case of plant cell wall formation occurs. This is the difference between animal cell cytokinesis and plant cell cytokinesis. In case of plant cell, they have cell wall, and after cell wall, they have cell membrane. As cell membrane cannot move inside, the cell membrane cannot move inside cell wall, it is immovable. That is why from the center, wall formation occurs towards the sides. अगर एनिमल सेल में याद हो तो हमने आउटर टू इनर साइड गए थे. इसमें इनर टू आउटर साइड मूवमेंट होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन. दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. In case of plant cell, the cell wall formation occur from the center to outer side, whereas in case of animal cell, from the outer to inner side. This is the difference. Whereas in case of animal cell, invagination occur, whereas in the case of plant cell plate formation occur.
एंड जैसे ये फॉर्म होता है सेल प्लेट बनता किससे? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज मेड अप ऑफ गोल्जी बॉडीज। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? मैम डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, वेरी गुड। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्जी बॉडी या फिर डिक्टियोसोम along with the deposition of calcium and magnesium. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज जो दो सेल्स के बीच में जो लेयर होती है मिडल लेमेला, इन केस ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, दूसरा प्लांट सेल है, दे हैव अ लेयर इन बिटवीन। इन दोनों के बीच में एक लेयर होगी, सीमेंट होगा, विच इज नोन एज एनीवन मिडल लेमेला। एंड दिस मिडल लेमेला सीमेंट बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है? प्लीज रेज योर हैंड, बी क्विक। ओके, सीरत, एलिना, रिया, पलक, जो, मलिका, महक, कौंडल, तन्वी, लक्ष्य, यस, हर्ष, कृतिका, ओके, महक, मीनाक्षी, सोनी, कृतिका, वेरी गुड, यस, उत्कर्ष, अंश, हर्ष, बेटे आई एम वेटिंग, ओके, उत्कर्ष, हर्ष, अंश, तो आई होप सभी को क्लियर हो चुका है। नाउ कमिंग टू इट्स सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। Ma'am, your voice is cracking. Okay, Macha, is it with everyone? Am I audible? Yes, मैम ma'am. क्रैक हो रही है थोड़ी Yes, छोटी। ma'am. Wait. Is it fine now? Yes, ma'am. यस मैम। ओके बच्चे, तो माइटोसिस का क्या फायदा होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? तो एक तो ये है इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेल्स जो हैं दे ग्रो इन साइज बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। Growth and development in case of the cell, it occurs via mitosis. It is a means of multiplication in higher organisms. हम मदर बॉडी में एक सेल से बने। नेम द सेल फ्रॉम विच वी आर फॉर्म्ड। मदर बॉडी में हम एक सेल से बने हैं, बताओ उसका नाम। Zygote. यस, जाइगोट। तो जाइगोट डिवाइड करने के बाद आपकी पूरी बॉडी फॉर्म हुई है। इट इज अ मींस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूनिसेल्युलर, इवन इन यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर। इनफैक्ट यूनिसेल्युलर में बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियाज में दे डिवाइड वाया दिस प्रोसेस ओनली, माइटोसिस, and it plays a vital role in reproduction as it maintains the chromosome number. जितना मदर का क्रोमोसोम नंबर होगा उतना ही डॉटर सेल्स, पेरेंट सेल, पेरेंट में मदर भी हो सकता है, फादर भी, बट बच्चों को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। Daughter cells will have the same chromosome number as that of the parent cell. So it is because of only this process. Very important, it helps in healing of wound. अगर चोट लगती है तो अपने आप स्किन आ जाती है या wound heal हो जाता है, it is because of this process, healing of wounds and repairing of cells is because of this process. Clear everyone? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Okay, bachon. So I'll leave today because I think mitosis is clear. So we'll start with the next topic, that is meiosis, in the next class, and I'll dictate the answers also. क्योंकि आपने ये mitosis का बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. Can anyone share this chapter's note in the group only? Who'll do that? बच्चे जिसके अच्छे notes